Hello viewers, today I am going to discuss very important topic of a structure of atom, the Bohr model of atom. Niels Bohr, a scientist, accepted the Rutherford model of atom, which asserts that total positive charge and mass of an atom are situated in a very small volume at its center called as nucleus, and electrons are moving around the nucleus on a fixed circular path called as orbit. But Rutherford failed to explain the stability of atom. So to explain the stability of atom, Bohr proposed following postulates. First, electron in an atom can move around the nucleus only on those circular or spherical paths where its angular momentum is integer multiple of definite quantity h by 2 pi, which are called orbit or cell. There may be several circular paths of electrons are available, but an electron can move around the nucleus only on those circular paths where its angular momentum is integer multiple of definite quantity h by 2 pi. So angular momentum of electron in atom Nb are equal to nh by 2 pi, where n is integer 1, 2, 3, 4, 5, called as orbit number. Thus an atom has several concentric orbits denoted as K, L, Mn, having orbit number 1, 2, 3, 4. Energy of electron moving in a particular orbit remains constant, and it increases with increasing orbit number or distance from the nucleus. So energy of electron in K orbit is less than L, then less than M, less than N. Electron of an orbit can be excited to any orbit of higher energy by absorbing a photon and transferred to orbit of lower energy by emitting a photon. But it means that any electronic transition between two orbits, electron absorb or emit a photon, only one photon. So energy of photon absorbed or emitted from energy electron E equal to E2 minus E1 equal to h nu, energy of a photon, or h by lambda, where E1 and E2 are energy of electron in two orbits and E1 is less than E2. Limitation of Bohr model. बोर ने एटम में कई ऑर्बिट की बात की KLMS, but he does not propose any explanation for arrangement of electron in these orbits. So Bohr theory is only valid for atom or ion containing one electron and failed for multi-electron atom. स्पेक्ट्रम आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, और रदरफोर्ड मॉडल में बताया था कि कंटिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी रिजल्ट्स बैंड स्पेक्ट्रम and loss of energy in form of packet results line spectrum. The electron is absorbing or emitting energy in terms of photons, so line atomic spectrum of atomic radiation is line spectrum. So line spectrum is successfully explained by the Bohr model. But the lines of atomic spectrum are split into two or more parts in electric field known as a Stark effect and magnetic field Lyman effect. This cannot be explained by the Bohr model. Now, application of Bohr model, calculation of radius or orbit, speed of electron, energy of electron in orbit. As we discussed in the Rutherford atomic model, electrostatic force of attraction between nucleus and electron is balanced by centrifugal force acting on the electron due to its circular motion. Electrostatic force according to Coulomb's law, constant K, Q1 charge of nucleus, JD atomic number,
E charge of electron and R radius of orbital. Q1 into Q2 by R square मतलब KJD square by R square. Centrifugal force MV square by R. So these two are equal. So from equation 1 and 2, MV square is equal to KJD square by R. According to Bohr model, angular momentum of electron in an orbit is equal to mvr equal to nh by 2 pi. तो r इक्वल टू nh by 2 pi mv. स्क्वायर कर रहे हैं दोनों, आर स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर की जगह एम इंटू एम एंड वी स्क्वायर. On putting the value of mv square from equation 3, this one. इक्वेशन 3 से mv स्क्वायर का वैल्यू दे रहे हैं तो r का फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर के एम जेड वी स्क्वायर. इसी एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट. अब इसको थोड़ा सिंपल करते हैं. एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के एम वी स्क्वायर दीज ऑल आर कांस्टेंट एंड एन स्क्वायर बाई जेड. This all constant have value equal to 0.529 angstroms, so R can be given as 0.529 n square by z angstrom, or R proportional to n square by z. Some questions. Radius ratio of first three orbits of hydrogen atom. The following atom z is also constant, so R proportional to n square. So R1 is to R2 is to R3 equal to 1 square, 2 square and 3 square, or 1 is to 4 is to 9. Calculate radius ratio of first orbit of H, He plus and Li2 plus. N becomes constant, so R is proportional to 1 by Z. So R1, R2, R3, Z for hydrogen 1, Z for He plus 2, Z for Li2 plus 3. Simple ratio 6 is to 3 is to 2. If radius of first orbit of hydrogen atom is A0, then radius of third orbit of He plus. R proportional to n square by z, so R1 by R2 can be given as n1 square into z2 and n2 square into z1. Value देखे R आ रहा है 9. Now speed of electron in atom according to Bohr model mvr equal to nh by 2 pi, so v equal to nh by 2 pi r. Putting value of r from equation 3. R का वैल्यू दे रहे हैं तो v का ये वैल्यू आ रहा है. अगेन इसको सिंपल करते हैं. 2 पाई के ई स्क्वायर बाई डॉलर कांस्टेंट, तो v प्रोपोर्शनल टू z बाई n. दिस कांस्टेंट हैज वैल्यू 2.18 मीटर पर सेकंड. A question: which of the following case speed of electron is maximum? So v proportional to z by n. So where z by n is maximum, there speed of electron is maximum. So it answer is 4. Frequency of revolution of electron and time period. Frequency मतलब cycle per second, and it is reciprocal of time period is time required to complete a cycle. So nu equal to 1 by t equal to v by 2 pi r. V is speed of electron, that is distance traveled in 1 second, and 2 pi r is distance traveled in 1 cycle. So v by 2 pi r denotes number of cycle per second. v का वैल्यू 2.18 वर्सेस z by n मीटर पर सेकेंड. कांस्टेंट जो 5.529 आंगस्टन लिखे थे उसको मीटर में कर रहे हैं. 529 to minus 10 मीटर n स्क्वायर बाय z और 2 pi 2 into pi. This value comes as this 6.56 or 15 z square by n cube per second. और mu1 by mu2 is t2 by t1, z1 by z2 का स्क्वायर and n2 by n1 का होल क्यूब. A question: which of the following electronic transition of hydrogen atom? Because hydrogen time period of electron increases by 8 times. Time period increases by 8 times. तो z constant है तो t2 by t1 equal to n2 by n1 का क्यूब. It is equal to 8. 8 equal to 2 to the power 3 मतलब n2 by n1 equal to 2. In all cases n2 by n1 equal to 2, so answer is 4. Energy of electron, kinetic energy plus potential energy. Potential energy is a relative form of energy and it is equal to work done when the body comes from its reference point to that particular point. So potential energy of electron is at infinite distance is considered to be 0, where there is no nuclear force of attraction.
The potential energy of electron is equal to work done when electron comes from infinity to the orbit of radius r. Orbit of radius r. So potential energy r square. फोर्स हुआ के जे डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर माइनस के जे डी बाई आर. ये पोटेंशियल एनर्जी हुआ. एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई 2. और एम वी स्क्वायर का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 दे रहे हैं, तो के जे डी स्क्वायर बाई 2 आर. नाउ पोटेंशियल एनर्जी के जे डी स्क्वायर बाई आर माइनस के जे डी स्क्वायर बाई आर, काइनेटिक एनर्जी के जे डी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस 2 के. एंड टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो इट इज इक्वल टू माइनस के ई और पी बाई 2. तो एनर्जी माइनस के ई के जे डी स्क्वायर बाई 2 आर ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम इक्वेशन 4. आर का वैल्यू दे रहे हैं, तो एनर्जी का ये एक्सप्रेशन आ रहा है. तो 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर Me4 by h स्क्वायर ऑल आर कांस्टेंट. तो वेरिएबल के रूप में जेड स्क्वायर एन स्क्वायर हुआ. तो के कांस्टेंट आया. के का वैल्यू डिफरेंट यूनिट में है. E1 बाई E2 इक्वल टू Z1 स्क्वायर बाई Z2 स्क्वायर इंटू N2 स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर. एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट डेल्टा इक्वल टू E2 बाई E1. E2 के लिए के जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर के जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर. तो फाइनल डेल्टा इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाई N1 बाई N1 स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम एक्सप्रेशन है के जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. जेड इज 1, मतलब के का वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किया Z1 और बाई एन स्क्वायर. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स. दिस इंडिकेट्स दैट एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव ऑर्बिट इवन इन एन E2 मैक्सिमम है. जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ता जा रहा है, एनर्जी डिफरेंस डिक्रीज करता जा रहा है. इसी बेसिस पर एक क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हाइड्रोजन एटम फोटोन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी रिलीज. इसे जज करने के लिए सबसे पहले हम लोअर एनर्जी स्टेट देंगे. लोअर एनर्जी ऑर्बिट जहां मिनिमम होगा वहां एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा. तो यहाँ लोअर एनर्जी स्टेट N1 है, N2 है, N3 है, N1 है. तो 1 और 4 में लोएस्ट एनर्जी स्टेट है. अब इसमें हम डिफरेंस देखें. जब लोएस्ट एनर्जी स्टेट आ गया तो उसमें डिफरेंस देखेंगे. यहाँ एक ऑर्बिट का डिफरेंस है, यहाँ 2 ऑर्बिट का डिफरेंस, तो आंसर इज 4. कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इन He प्लस आयन कम्स फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट. 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाई N1 स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर. इलेक्ट्रॉन वोट ले रहे हैं क्योंकि के का वैल्यू. तो 13.6 2 स्क्वायर N1 2 है और N2 4 है. Determine ratio of energy of photon absorbed by hydrogen atom when it undergoes N2 to N3 and N4 to N6. ये लास्ट ईयर डेट में आया है क्वेश्चन. के तो के और जेड कट जाएगा. E1 बाई E2. यहाँ N1 2 है और N2 3 है, और E2 के लिए N1 4 है और N2 6 है. सॉल्व करके 4 बाई 1 आ रहा है. In which of the following electronic transition He plus requires photon of same energy required for N1 to N2 for hydrogen atom. तो हाइड्रोजन एटम के लिए के जेड स्क्वायर 1 हुआ, N1 1 और N2 2. तो के 3 बाई 4. He प्लस के लिए जेड 2 हुआ, तो 2 स्क्वायर N1. तो He का N1 और N2 दोनों इक्वल है. तो He के लिए 1 बाई N1 स्क्वायर बाई 1, तो 3 बाई 6 आ रहा है. तो ये वैल्यू जब N1 2 लेंगे और N2 4 लेंगे. नाउ स्पेक्ट्रम. Speed of light depends on medium in which travels. So when light moves from one medium to another medium, speed becomes different and light deviates from its path, original path.
The deviation of path of radiation due to change in medium depends on wavelength. So, when visible day, 7 colors pass through a prism, 7 different wide band appears, which is called a spectrum. Absorption spectrum. When radiation is passed through a substance, a part of wavelength is observed. So, in a spectrum of transmitted rays, intensity of wavelength absorbed decreases sharply, becomes very low. So, it indicates absorbed wavelength. So, it is called absorption spectrum. Emission spectrum. When a substance in gaseous state is heated, electron of atoms absorb energy and get excited to any orbit of higher energy. After some time, these excited electrons return to their ground state or any orbit of lower energy by emitting photons in form of radiation. The spectrum of such radiation is called emission spectrum or atomic spectrum. Energy of photon emitted hc by lambda equal to E2 by E1. E2 by E1 का वैल्यू दे रहे हैं, ये एक्सप्रेशन आया, तो 1 by lambda ये हुआ, तो 1 by lambda और u by equal to k by hc एक कांस्टेंट लिया जाए, रिजर्व कांस्टेंट जिसका ये वैल्यू है. So wavelength of emitted radiation depends on n1 and n2, number of orbit within orbit number of electronic transition. So different electronic transition rays of different wavelengths are emitted, which corresponds to a large number of lines in atomic spectrum. जब ये number of lines से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, number of possible lines में electron in atoms come from nth orbit to ground state, मतलब first orbit. 10 into ny minus 1 by 2. Number of possible electron in atom comes from n2 to n1 orbit. Now it is n2 minus n1 or n2 minus n1 plus 1 by 2. When hydrogen gas is used for the experiment, the atomic spectrum is called hydrogen spectrum. The several lines in hydrogen spectrum are divided in following series. Lyman series in UV region, where electrons from first orbit from higher orbits. n1 1, n2 maybe 2, 3, 4, 5, 6, 7. Balmer series visible region में आएगा जिसमें electron comes from second orbit to higher orbit. Paschen series higher region में आएगा, electron comes to third orbit from higher orbits. Bracket series higher region में आएगा, electron comes to fourth orbit from higher orbit. Fund series electron comes to fifth orbit from higher orbit. Humphrey series far higher region में आएगा, electron comes to sixth orbit from higher orbit. अब इस पर न्यूमेरिकल करने के लिए आपको सिर्फ मेन n1 और n2 का वैल्यू देना है. जो फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज के लिए n1 ऑलवेज 2 होगा और फर्स्ट लाइन है तो n2 3 होगा, मतलब 3 to 2 फर्स्ट ट्रांजिशन. सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज के लिए n1 ऑलवेज 1 होगा और सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन है 2 to 1, तो सेकेंड लाइन हुआ 3 to 1. फोर्थ लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज के n1 ऑलवेज 4 होगा. फोर्थ लाइन, फर्स्ट हुआ 5 to 4, सेकेंड हुआ 6 to 4, थर्ड हुआ 7 to 4, फोर्थ हुआ 8 to 4. लिमिटिंग लाइन ऑफ पास्टिंग सीरीज में n1 3 है और लिमिटिंग जब भी पूछ रहा है तो n2 को इंफिनिटी लेना है. कुछ क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन्स आर पॉसिबल इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, n का वैल्यू 5 लेके 10 आ रहा है. हाउ मेनी लाइन्स आर पॉसिबल इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम कम्स फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हुआ सेकेंड, एक बढ़ा देना, तो फिफ्थ एक्साइटेड हुआ 6 और फर्स्ट एक्साइटेड हुआ 2, तो n2 हुआ 6 और n1 हुआ 2. इस एक्सप्रेशन में पुट कर रहे हैं, 10 आ रहा है. कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, कैलकुलेशन करेंगे n2 n1 का वैल्यू देके. सिंपल है. वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ, ये क्वेश्चन मैं आपको हिंट दे चुका हूं. इस क्वेश्चन को देखो, इन विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हाइड्रोजन हैव सेम वेवलेंथ एज सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ He+. तो हाइड्रोजन का वेवलेंथ निकालना, Z1 लिया, N1 N2, He+ के लिए Z2 हुआ और सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज मतलब 4 से 2, तो N1 N2
सॉल्व करके आ रहा है 1 - 1/4 मतलब n हुआ 1 और 8 into 2. That's all. Thank you for being with. Subscribe my channel and press the bell icon and share with your friends also. This is for information channel. Thank you.